Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum and welcome to e-learning Rising Shiny School grade 9 bio course. I'm your bio teacher Fraz Ranjun. We will continue chapter number 10, respiration. For this, please open your textbook page numbers 174 till 176. Today our main learning objectives are: describe the ventilation, explain the composition of inhaled and exhaled air, explain the fatigue and oxygen debt. Okay students, let's start with the ventilation. Ventilation means movement of air in and out. So movement of the air means air inhaled into the body and exhaled out from the body. All this process is called ventilation. So breathing, one step of respiration basically, is often called ventilation. So ventilation, you can say, also known as breathing, take place by the movement of the chest. Okay, how it possible? Because of the movement of the chest. If chest stop moving, we can't breathe. Remember, if chest muscles not working and is not going to be expand or contract or relax, we can't breathe. So this movement of the chest can be divided into two steps. Number one, inspiration and expiration. Okay, and remember, in the exam this topic they can ask the mechanism of the breathing. Okay, so remember how it can become in the exam. Please write the mechanism of the breathing, so you can write from the ventilation till the end of this topic. So job done. So let's start with the inspiration. First of all, the intercostal muscles, what is it, how it look like, the structures, everything. So let's start. Ventilation is brought about the alternate contraction and expansion of the thoracic cavity. So what is it? This is thoracic cavity. Okay, inside is a thoracic cavity. Okay, so thoracic cavity, the alternate contraction and expansion. Okay, because of this alternate contraction and expansion, ventilation happen. And how it possible? So this brought about the two set of the muscles, the external and internal intercostal muscle. So there are two kinds of intercostal muscle. Number one, external, and number two, internal intercostal muscles. Intercostal muscle basically present inside the rib cage and between the ribs. Okay, or you can say on the ribs. Okay, so all these together work together, and then because of this these muscles, rib cage can expand and contract easily. So how it will work, we will discuss now. So let's start with the intercostal muscle. So intercostal muscle, you can see, suppose I took this area and zoom in. After zooming, you can see between the ribs, the muscles, outside muscles, because of this is these muscles present the outside. Okay, this is called external intercostal muscles, and inside all the muscles called internal intercostal muscles, and the most innermost intercostal muscles, but you can say as a pair intercostal muscles. Okay, so these are intercostal muscle, inner or internal, and this one external intercostal muscles. Okay, so I hope that you understood the intercostal muscle, where they present and how it's going to be work now. Next one is diaphragm. Diaphragm, at the end of the rib cage, okay, you can see a large sheet of the muscles. This large sheet called diaphragm. Okay, very important sheet. Because of this movement can be take place as well. So let's start one by one. Inspiration or inhalation.
is taken in of the air into the lungs. Suppose we take in the air, it comes on the lungs. This is called inhalation. So you can see in this picture that inhalation and exhalation happening. So the air is coming and the rib cage going to be expand. Okay, so let's start one by one. So what going to be happen when the breathing in, this process called inspiration or inhalation, the muscles of the diaphragm contract and become flat. So you can see here inhalation happening. Now what happened? It become flat. This muscle, this is called diaphragm muscle become flat. This one, now you can see these are the muscles become flattened. Which one? Diaphragm muscles. Okay, at the same time external intercostal muscle contract. Here is the muscles, they are going to be contract and this pull the rib cage upward. Because of this contraction the rib cage, okay, comes up, pulls upward and outward. Okay, and the pressure of this inside cavity fall down. When the pressure going to be fall down, so you can put more air on it. So it means air get inside the lungs very easily because the pressure is very less. So whole this process called inspiration or inhalation. One more time, taken in the air into the lungs. When breathing in, inspiration, the muscles of the diaphragm contract, become flat. Okay, so when you take in the air, the muscles become flat. Okay, which muscles? Diaphragm muscles. And air get inside. After air getting inside the lungs, what going to be happen? Yes, the cage comes up. Okay, because of the contraction of the external intercostal muscles. All right, and because of this expansion, inside pressure, okay, falls down and air rushes inside to fill this gap. Okay, it's look like this. You can see that if you get inside the bus, okay, there is many passenger. Okay, so you can't get the space even for standing, especially in the morning or rush hours. But when bus reaches nearby to the destination, many passenger getting out from the bus, so you can easily move. As well as I'm giving you very easy example. You know, there is a expandable bags, means the traveling bag. First it become very small. When you pull up one more zip, okay, it expand. Then pull one more zip, more expansion, more space. Okay, pull more one more zip, it become larger and larger. Same thing happening here. Okay, when it's pulling out, the more space can be available and air going to be filled on it. Okay, so in Urdu I'm just going to explain very briefly. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही एयर जिस्म के अंदर जाती है, ये प्रोसेस कहलाता है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन का। ये प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही हम सांस अंदर खींचते हैं इनहेलेशन का प्रोसेस शुरू होता है और डायफ्राम का जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जहाँ के जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि रिब केज जो होता है वो खींचता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठता है और फैलता है, जिसकी वजह से इनसाइड जो अंदर रिब केज के अंदर जो कैविटी होती है, जो जगह होती है,
उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी सही गिर जाता है, फॉल कर जाता है और काफ़ी स्पेस बन जाती है हवा के लिए, और आसानी से हवा इनसाइड यानी बाहर से अंदर आ सकती है। ये ऑटोमेटिक जैसे हम यूँ खींचते हैं वो करते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम ऑन होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है सांस लेने का अमल। अगर खुदा न खासा ये मसल्स का वर्किंग ना करें तो प्रेशर फॉल डाउन नहीं होगा और एयर नहीं आ सकती है अंदर, और जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी और बाज़ औक़ात डेथ भी हो सकती है। नाउ सेकंड स्टेप, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। When the breathing out, expiration, the muscles of the diaphragm relax, dome shape. Okay, and form the dome shape. Remember this one. Okay, so these are the process of the inhalation. You can say the relax. Okay, oh sorry, the muscles become flat. Okay, but here when it become relaxed and it made the dome shape, the diaphragm become dome shape in exhalation. Okay, remember. So when the breathing out, expiration, the muscles of the diaphragm relax and become dome shape. You can see here. Alright, and as well as here. See, ये इसने इनहेलेशन किया, फ्लैट हो गए, जैसे ही एक्सेलेशन किया ये डोम शेप बन गया। सही है, सांस अंदर खींची, फ्लैट होगा, सांस बाहर निकाली और डोम शेप बन गया। तो अभी देखिएगा, ये डोम शेप बना, ये रिलैक्स हो गया, ये डोम शेप बना, ये फ्लैट हो गया, ये डोम शेप और ये फ्लैट हुआ। सो ये प्रोसेस आपको दिखाया गया है कि किस तरह डायफ्राम मूव करता है, और ये डायफ्राम की वजह से ये क्लिप केज कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, सो सेम टाइम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, और सेम टाइम क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, और एयर जो होती है वो एक्सहेल आउट होती है। रिब केज ड्रॉप डाउन बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, और रिब केज अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। यानी हमने सांस खींची, सांस जैसी अंदर लेंगे हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, जैसी सांस बाहर निकालेंगे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड, सो एयर स्क्वीज आउट। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है, वो किस वजह से निकलती है कि रिब केज ड्रॉप डाउन होता है, जैसे ही नीचे जाता है वो प्रेशर इंक्रीज होता है लंग्स पे, और लंग्स के जो प्रेशर हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। इसकी आसान सी मिसाल आपको दे दूं कि रिब प्रेशर डालती है लंग्स के ऊपर, सेम इसी तरह जैसे सपोज आप गुब्बारे को दबाएं, सही है, बलून लें और उसको प्रेस करें, जैसे ही वो प्रेस करेंगे तो वो या तो फट जाएगा, या फिर अगर वो कोई टाइनी सा होल होगा या उसका धागा आप खोल दें तो एयर सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। यानी जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है एयर सारी की सारी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन का। नाउ कंपोजिशन ऑफ द इनहेल एंड एक्सहेल हियर, सो लेट्स स्टार्ट। Remember, air is a mixture of the gases. So how many percent? Oxygen 21% present, and all the oxygen we going to inhaled, but exhaled out how many? Only 16%. So rest going to be absorbed into the blood, okay, and across the gaseous exchange of the surface. Why going to be absorbed? Because of the second step of the respiration, cellular respiration going to be take place. Now second one is carbon dioxide 0.01004, okay, carbon dioxide 0.04%. Inhale, we are going to inhale out, and exhaled out 4%. Okay, inhaled in 0.04% and exhaled out 4%. So carbon dioxide brought by the blood is released across the gaseous exchange surface. Okay, after the cellular respiration process, carbon dioxide produced, and this carbon dioxide has to be exhaled out from the body. So how it's going to be possible? Because of this breathing. Okay, now nitrogen present how many percent? 78% in the air. Same 78% we are going to inhale, because all the air we are going to inhale, but how many exhaled out? Same 78%. So nitrogen gas has no use by the cell. Water vapor, okay, it depends on that sometime water vapors, high humidity
low humidity, so it's variable. Okay, it varies depend on the. But when we exhale out, a lot of water vapors present in the air. So water vapors and is lost as air is breathed out. Okay. Temperature. Temperature varies. Okay. Sometimes cold air, hot air, temperature, normal air. Okay. It's a variable. But when we exhale out, you can feel there is a warm air. Okay. Usually air is warm, which is passes to the respiratory passage. Now, effect of the exercise on the rate of the depth by breathing and its relation of the energy requirement. You can see here, a man is cycling and donut hanging outside, but he could not reach to the donut. When we do the exercise, muscle cells need lot of energy, lots of oxygen very quickly, and our heart and blood circulation becomes faster. Okay, so we need energy, and how we get the energy? Because of the oxygen and cellular respiration. Okay, you know how we get the energy? Because of the cellular respiration. And in cellular respiration, we need two things: number one, food; number two, oxygen. So this oxygen we need more because we need more energy. So eventually the limit is reached. The heart and the lungs cannot supply the more oxygen into the muscles. Suppose we are running and running and running or cycling, we become very tired. This is called the limit. Okay, or stamina, we can say. Okay, our stamina says stop now. And how we feel? We feel the tired or we feel fatigue. Okay, but here fast, more energy is still need for the movement of the muscles. If we, because we are working here, we are cycling, we need more energy very fast, and because of the movement of the muscles. Okay, so you can see here, ये साइकिलिंग कर रहा है और इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और बहुत तेज़ी से चाहिए। तो जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो इसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, हमें सांस भी ज़्यादा तेज़ी से लेना पड़ेगा। और जब सांस हम ज़्यादा तेज़ी से लेंगे तो ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा तेज़ी से करनी पड़ेगी, तो दिल भी यानी हार्ट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़केगा, यानी उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो हार्ट बीट भी तेज़ हो रही है और हमने सांस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेना है ऑक्सीजन के लिए। जाहिर सी बात है, हर एक की जब हम लिमिट पे पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये देखें, दिस एनर्जी डेथ इज़ मेड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर क्या होगा, ये जो तवानाई की कमी है इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए पूरी की जाएगी। एनारोबिक दो तरह की आपको याद रखिए, एक रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो एरोबिक होती है, और जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, एन का मतलब होता है विदाउट, जहन में रखिएगा। अच्छा जी, सम ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इवन इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होती है वो टूटती है, ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन के बगैर ही, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर ये बड़ी डिटेल से बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, व्हेन वी स्टॉप द एक्सरसाइज वी हैव द क्वाइट अ लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स एंड ब्लड। ठीक है, इस लैक्टिक एसिड, एक और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते चलूँ कि इस लैक्टिक एसिड की वजह से जो हमें मसल्स में पेन होता है, यानी जब हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, इसकी वजह से होता है कि, और ये हमारा बेसिकली एक अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म बना के दिया हुआ है कि जब भी हम टायर्ड फील करते हैं, बहुत थकावट महसूस करते हैं, तो वो बॉडी बोलती है बस ये आपका स्टेमिना इतना है, आप बैठ जाएँ, रिलैक्स करें, ताकि आपके मसल्स डैमेज ना हो। मिसाल दे रहा हूँ आपको, सपोज़ आप बहुत ज़्यादा थक गए लेकिन फिर भी आप बोल रहे नहीं जी मैं एक्सरसाइज करूँगा, तो आपको मसल्स इंजरी हो सकती है, यानी मसल्स ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, और वो डैमेज हो सकता है।
तो उससे बचने के लिए ये ख़ुद का निज़ाम बॉडी का होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होगा आपके मसल्स में, उतनी ज़्यादा फटीग बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा थकावट बढ़ेगी, और वो आपको बोलेगा रुक जाओ जी, स्टॉप हो जाओ। When we stop the exercise, we have quite a lot of lactic acid in our muscles and blood. सही है, ब्लड में और मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। The deposition of the lactic acid make the muscles fatigue. Okay, because of this, यानी ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल्स के अंदर जब जमा होता है, इसकी वजह से हमें फटीग यानी थकावट महसूस होती है। दिस लैक्टिक एसिड मस्ट बी ब्रोकन डाउन, और इसको हमें लाजमी तौर पर हमें इसको कम करना है, इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, बाय द कंबाइनिंग इट विद द ऑक्सीजन। तो आपने देखा होगा थकावट के बाद हम जब बैठते हैं तो सांस तेज़ी से लेना शुरू करते हैं, यानी रिलैक्स करते हैं, तो ऑक्सीजन जैसे जैसे अंदर जाती है तो ये लैक्टिक एसिड के साथ मर्ज करती है और इसको ब्रेक डाउन कर देती है। और जैसे ही लैक्टिक एसिड हमारे जिस्म में कम होने लग जाता है, हमें थकावट ख़त्म हो जाती है। द अमाउंट ऑफ नीडेड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मसल इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेथ। ठीक है, अब हमें कितनी मिकदार में ये चाहिए, ठीक है, लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, वो अमाउंट जो लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए चाहिए होगी वो कहलाती है ऑक्सीजन डेथ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बी साइलेंट होता है, डेथ परसेंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, द अमाउंट ऑफ नीडेड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मसल इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें सीखी, फटीग जो डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड है मसल्स के अंदर, और ऑक्सीजन डेथ जो इस लैक्टिक एसिड को मसल से रिमूव करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका ये लेक्चर होपफुली आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और इसके बाद आपने लास्ट लेक्चर है डे 2 के अंदर डिसऑर्डर्स का।